गुजरात के वडोदरा के हरणी बोट हादसे में जान गंवाने वालों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। हरणी तालाब में बोट पलट जाने की दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चे विश्व कुमार, निजामा और नैसी को श्रद्धांजलि देने के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विश्व किशनवाड़ी कबीर चौक में रहता था। दुर्घटना में जान गंवाने पर परिवार सदमे में है और गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। दोनों की अंतिम यात्रा आज निकाली गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़े और इलाके में मातम छा गया। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऋत्विज जोशी और चंद्रकांत श्रीवास्तव पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया। मारो एक काळजाનો ગટકો સ્વર્ગ થઈ ગયો છે, જે કારણસર કોર્પોરેશન કોઈ બી અથવા જે બી ત્યાંના કાર્ય નાવડી ચાલક હોય એની પરની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી। પૈસાનો પાવડો આપીને તમે મારા છોકરાને પાછો નહીં આપવાના। બોટિંગની અમને જાણકારી જ નથી। અમને ખાલી એટલું જ ખબર હતી કે મારો છોકરો એક ગાર્ડનમાં ફરવા જાય છે, એના માટે હું મારા છોકરાને લઈને હમણાં જ હું ફરીને આવ્યો છું। મારે કોઈ જરૂરિયાત નથી। આ છોકરાની એક જીદના કારણે